Assalamualaikum, dear students and my dear viewers. I'm Tanveer Ahmed Mir, teacher at BHSS Hatmula Kupwara. Dear students, our topic is uh, objectives of population education. It is the subject education for class 12th, and uh, objectives of population education is our topic. Dear students, the objectives of population education is that it uh, helps us to understanding of demographic concepts understanding of demographic concepts. uh, Demography means abadi, population. To develop an understanding of some basic demographic concepts and processes. तो पॉपुलेशन एजुकेशन जो है, इससे हमें किसी एरिया की, किसी जगह की, किसी कंट्री की, किसी स्टेट की डेमोग्राफी यानी कि आबादी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये प्रोसेस इसके बारे में, ये कैसे बढ़ती है, किस एरिया में कितनी आबादी है, तो सेक्स रेशो क्या है, तो ये हमें पता चलता है वहाँ का. एंड नंबर सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्राइसिस ऑफ ओवर पॉपुलेशन. तो इससे हमें ये अंडरस्टैंड होता है, ये हमें ये नॉलेज मिलती है कि क्राइसिस ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्या है, व्हाट आर द क्राइसिस. तो ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या मुश्किलात है, क्या क्या क्राइसिस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है, तो इससे हमें वो पता चलता है. टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द crisis of overpopulation as an outcome of the falling death rate and an appreciation that the advances in science and medicine have achieved great control on death. Dear students, this population education develops an understanding अबाउट द क्राइसिस ऑफ ओवर पॉपुलेशन. इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या क्राइसिस डेवलप होता है, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है. तो और इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है, और इससे हम ये भी सीखते भी है कि हाउ वी कैन ओवरकम फ्रॉम दीज क्राइसिस. और एंड ये डेथ रेट जो कम हुई है, डेथ रेट की रेट जो है, ये बहुत डाउन हो गई है पिछले कुछ डिकेड्स से. तो इससे हमें हमें मतलब ये अप्रिसिएशन, वी शुड अप्रिशिएट दैट, एंड द अप्रिसिएशन दैट द एडवांस और साइंस और टेक्नोलॉजी में जो ने काफ़ी जो एडवांसमेंट हुई है, काफ़ी तरक्की की है, तो इससे डेथ रेट पे काफ़ी कंट्रोल हुआ है. और बर्थ रेट जो चूँकि हमें चेक करना है, ओवर पॉपुलेशन से बहुत से क्राइसिस होते हैं, तो हमें वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. Objectives of population education is to understand the influence of population characteristics, to develop an understanding of the influence of population characteristics on the various aspects of human life, social, economical, political life. जो है, इससे हमें ये पॉपुलेशन एजुकेशन से या पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन से हमें ये पता चलता है कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन लाइफ पे, ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन लाइफ पे, सोशल लाइफ पे, इकोनॉमिकल लाइफ पे, कल्चरल लाइफ पे, और पॉलिटिकल लाइफ पे ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या क्राइसिस होते हैं, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. और इससे खूबी भी पता चलती है और खामियां भी पता चलती है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर. Population education helps us to develop an understanding of the biological factor and phenomena of reproduction which are responsible for the continuation of the species. क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि बायोलॉजिकल फैक्टर जो है, ये इससे हमें ये नॉलेज डेवलप होती है कि बायोलॉजिकल फैक्टर जो है
लाइक फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन जो है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज। इससे हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर यानी कि फिनोमेना ऑफ रिप्रोडक्शन, जब हम जो यंग वंस जो प्रोड्यूस होता, हर एक स्पीशीज यंग वन प्रोड्यूस करता है, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स जो है, मतलब ये हमें किस तरह, मतलब ये किस तरह मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से, ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन से कौन कौन से मुश्किलात होते हैं, तो किस तरह हमें इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, इससे कौन कौन से मुश्किलात आते हैं, ये हम इससे सीखते हैं। Appreciating relationship between the standard of living of family and its size. Appreciating relationship between the standard of living of family and its size. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, हमें वो अप्रिसिएशन करना चाहिए। जिस अगर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा ठीक है, हाई है, वी शुड अप्रिशिएट दैट। और फैमिली साइज अगर किसी का स्मॉल है, तो वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट दैम। क्योंकि जो स्मॉल फैमिली होती है वो हैप्पी लाइफ गुजारते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी हाई होता है, तो वो अच्छी एजुकेशन बच्चों को दे पाते हैं, अच्छा हेल्थ स्टैंडर्ड, अच्छा डाइट। तो इन ऑल रेस्पेक्ट्स वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ठीक रख सकते हैं। तो appreciating relationship between the standard of living of the family and its size, to develop an appreciation of the relationship between the standard of living of the family and its size in terms of the attainment of high level of health, education, housing, diet, and other amenities of life. So appreciating the small family size, to develop an appreciation of the small family size in a proper and desirable form. तो we should appreciate the small family size. अगर किसी की family size small है, like जो एक स्लोगन होता है, हम दो हमारे दो, तो अगर कोई ऐसा स्लोगन फॉलो करता है, ऐसा स्लोगन मानता है, हम दो हमारे दो, ये फॉर्मूला पे चलता है, तो वी शुड अप्रिशिएट सच टाइप ऑफ फैमिली, सच टाइप ऑफ कपल, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कपल है जो दो ही बच्चे रखते हैं, या दो से कम एक ही रखता है, तो इवन कुछ कपल ऐसे भी है जो प्रेफर करते हैं अडॉप्टेड, किसी के बच्चा अडॉप्ट कर देता है, और तो we should appreciate such families, such couple. We should definitely appreciate them. Understanding the ways to check population growth. To understand and to develop an understanding of the fact that there are ways to plan a parenthood, to regulate family size, and consequently check population growth. So the ways to check the population growth, मतलब to develop an understanding, there are so many ways to check the population growth. हमें मतलब ये population growth जो है ये मतलब check करना चाहिए, to understand the facts that there are ways to plan parenthood. Parenthood मतलब means parent बनने से, एक मतलब बच्चा कंसीव होने से, एक माँ या एक बाप बनने से, there are many ways to check, to control the pregnancy, और कंट्रोल मतलब ये प्रेगनेंसी कंट्रोल किया जा सकता है, या बच्चा न भी बन सकता है। देयर आर सो मनी वेज, सो मनी वेज एंड सो मनी medicines available in the market which controls the pregnancy, and मतलब जिससे फैमिली साइज कंट्रोल में रहती है, एंड कॉन्स्टेंटली चेक्स जिससे पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहती है। Awareness of population policies, to develop an awareness of the population policies and programs of the country. तो population policies, awareness of population policy, to develop an awareness of population policies के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये पॉपुलेशन ये हमें फिलहाल बच्चों को ही पढ़ाना है, जो 11th या 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो उनको हमें ये पॉपुलेशन पॉलिसीज अवेयर करना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एज लिस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1971। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में क्या ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं पॉपुलेशन एजुकेशन के बारे में?
Some of important objectives of population education for secondary schools developed by the Government of India, Department of Family Planning, New Delhi, and the Government of India, WHO, World Health Organization, workshop on health and population in schools, or as under बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स। पॉपुलेशन चेंज जो होती है वो हमें उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है। पॉपुलेशन डायनामिक्स के बारे में, पॉपुलेशन चेंज के बारे में लोगों को, बच्चों को देनी है इंफॉर्मेशन, बच्चों को अंडरस्टैंड करना है कि पॉपुलेशन चेंज क्या है। इंक्लूड्स द ग्रोथ रेट एंड इट्स डिटरमिनेंट्स structure of population in country in the context of world population, relationship between population growth and social economical development, appreciation of significance of population characteristics for the present and the future qualities of life, including economical development and the attainment of high level of health, education, housing, diet, and other amenities of life. And number third point is a realization that size of family can be easily planned for the benefit of individuals, family, and that large families are not necessary in present day's development. Understanding the risk involved for the mother and child. तो हमें ये मतलब एक बच्चों को पढ़ाना चाहिए या सिखाना चाहिए कि ज़्यादा प्रेगनेंसी से, ज़्यादा डिलीवरी देने से तो ये दैट इज़ रिस्क फॉर both the parent, both the mother and the child. And appreciation of appreciation of small families, we should appreciate the small families, जैसे हाई क्वालिटी, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ स्मॉल फैमिली जो होता है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई होता है। वी शुड अप्रिशिएट such families who are adopting, who are following such method. Understand the government family planning program, गवर्नमेंट ने कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाए हैं। We should understand that, we should understand that, and we should aware other people, other married people about that, so they can follow in their life, so they can follow that programs, that policies, that methods in their married life. Thanks. This was the topic of objectives of population education.